हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू रिसर्च चैनल स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। अभी कुछ दिन पहले जेई मेन का रिजल्ट आउट हुआ था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा हुआ है और कुछ ऐसे भी होंगे तो जिनका उतना अच्छा नहीं हुआ एज पर एक्सपेक्टेशंस। बट आई विल से कि जो हो यार इस बार बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, आई नो। बट आई विल स्टिल से टू लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम और on the next shift especially. Now, all of you know that WBJEE is around only two and a half months away, and so it's important to study well from now and how to use the strategy. So, I am going to try and share some strategies which may be helpful and important for the WBJEE exam. First, I will say that mock tests are very important बिकॉज मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो एक्चुअल क्वेश्चन जो है उनके पैटर्न से आप हैबिचुएट हो जाएंगे। सो आई विल से कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ट्राई टू गिव एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट पर वीक, जिनसे कि आपका प्रैक्टिस और हैबिचुएशन भी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द रिविजन पार्ट बिकॉज दिस इज द पार्ट वेयर मेरी स्टूडेंट्स नेग्लेक्टेड और उनका अच्छा नहीं लगता है। But we have to keep in mind that revision is very important for any type of exams. जो अब चीज़ आप कर रहे हैं अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग इट. So I will say at least try to keep sufficient amount of time per week for revision. Not that I'm telling that revise all day, but please do keep sufficient amount of time per week for revision for all the three subjects: physics, chemistry, and maths. Third point is that I think many of the students here are appearing for the phase 2 JEE exam that is starting from the April, and dates are not given obviously. तो जिनका जो लोग जेई मेन दे रहे, from about 10 to 15 days before try to focus on JEE मेंस. उनका मैंने मॉक टेस्ट क्वेश्चंस वो आप प्रैक्टिस कीजिए. स्टॉप WBJEE मॉक टेस्ट ऑन एनी क्वेश्चंस एट दैट टाइम. देन जब आपका एग्जाम हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट अगेन द WBJEE पार्ट, like giving the mock test and practice questions of WBJEE and all. और जो लोग अगर होंगे कि जेई मैंने फेज टू नहीं देंगे तो मैं उनके लिए बोलूँगा तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं पूरा WBJEE फॉर द नेक्स्ट period of time. Fourth point I would like to mention is for maths and any other subjects like the physics, chemistry, जो आपको पहले भी चैनल पे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स दिया गया था इन द PDF फॉर्मेट, ट्राई टू कवर अप दैट वेरी वेल बिकॉज WBJEE में कुछ वेटेज ऑफ चैप्टर्स से कुछ आता है, कुछ कुछ चैप्टर से दो तीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो जो इम्पोर्टेंट एंड चैप्टर से वो आप ध्यान से कीजिए और प्रैक्टिस करने की ज़्यादा कोशिश करिएगा. फिफ्थ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी important, that while you are giving the mock test, I will say to give the mock test in time of the actual exam, like maths and physics chemistry, like shift 1 or शिफ्ट टू, पेपर वन पेपर टू, दो आप एक्चुअल एग्ज़ाम के टाइम से देंगे तो हैबिचुएट हो जाएंगे. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आई नो जो लाइक लेट मॉर्निंग पे उठते हैं और आफ्टरनून में कुछ और काम और नैप रहता है. तो आई विल से कि अगर आप इस टाइमिंग से हैबिचुएट हो जाएंगे तो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Now coming to our next point, this is also very vital that in the next amount of months or time, please do avoid any kind of distractions, because अगर इस समय में कोई स्टूडेंट्स कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कुछ और चीज़ से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट him or her back in the actual part, because in the time is very less. अगर इस समय कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कहीं सोशल मीडिया वीडियो गेम वॉट एवर मे बी द डिस्ट्रैक्शन, आप नहीं अच्छा कर पाएंगे. बिकॉज
time is very less and it's very hard to get out of distraction within certain period of time. So it's my request to all the students, please do avoid any kind of distractions in the last period. अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपने प्रिपरेशन 2 years 3 years whatever you have started, वो एकदम मेहनत का फल पानी में ही जाएगा. So is please do avoid that, you will get not the result. Seventh point I will say that बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं कि मेरा क्या मार्क्स आएगा, क्या रैंक आएगा, मार्क्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे. बट आई विल से कि स्ट्रेस मत लीजिए. The mock test that you are giving, try to analyze the answers very nicely, because if you analyze and find the mistakes, then it will rectify and perform well in the actual exam. So please try to avoid unnecessary stress and try to relax every day by taking out an hour by just doing sing, by last listening to the songs or any other hobby that you like. So please do not take any unnecessary stress. Last point that I have mentioned here is for the WBJEE exam, the questions number is very more than the JEE main or other exam. To try to increase your speed a little bit, because समय कम है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आता है. एंड प्रैक्टिस आप जिस रिसोर्स से भी कर रहे हैं for any book or any exams there, please try to find out that the exams that you are giving or any from the resources which you are practicing, the level is according to a WBJ exam or not. Because if you do not practice according to a level, that it will be of no use, right? So the level of the exam should match with WBJE. Like this तरह से question आते हैं, उस हिसाब से कीजिए. And that's all I wanted to say from my point. बाकी आप ट्राई टू स्टडी वेल, आपका बेस्ट दीजिए. आई नो मेनी ऑफ यू आर मे बी डिप्रेस कि जेई में अच्छा नहीं हुआ, बट आई इट्स हार्ड टू से दैट move ahead, but still I will say try to move a little bit ahead and try to focus on the shift to JEE and WBJE. That's all for today. We'll meet you soon in the next video. Till then, take care, goodbye, and study well. Thank you.